Good afternoon, everyone. I hope you all can hear me and see me. Please write yes in the chat if you can hear me and see me clearly. Thank you. Thank you for the confirmation. Arpit sir, if you can sit opposite to the window, I guess that will be great. Guys, we'll start the session in next 2 minutes. Today is the Wednesday afternoon session with Arpit Deval sir. We'll start with the index outlook, Nifty overview. If we have any option strategy trade, we'll go ahead with that, and then we'll move towards the BTST and the queries that you will have and you are posting on the chat section. So feel free to drop your queries. We'll take them one by one. And अगर आपकी queries अभी यहाँ answer नहीं हो पा रही हैं, then please share them on Stockholm. We'll be happy to answer it there. Yeah, the screen. Arpit sir, you can share your screen and then we are good to go. Sure, just give me a minute. The screen is visible? Yes, sir, the screen is visible. Okay. Yeah. Very good afternoon, guys. Welcome to midweek Wednesday play. So first, starting with for the session, the flow for the session would be starting with Nifty, Bank Nifty outlook, followed by broader outlook. Few ideas that are looking good in such choppy, volatile markets. Few BTST or STPT ideas depending on the market setup wise, and if any option trade for tomorrow's expiry or for any strategy for Bank Nifty, will update on the same. Wishing you a very good afternoon once again. Starting with Nifty. Nifty, if you talk about all the setup wise, today after a flattish or in fact we have seen a gap down opening in the initial hour. However, good recovery was seen from lower levels, and somehow it managed to extend its gains above 23,000 levels, but again failed to hold at higher levels. And this has been the nature of the market for the last couple of days. So Nifty opens gap down, recover from intraday lows, but failed to hold at high levels near 23,000, 23,050 levels, and then again it slipped lower. So अगर पिछले 10 मिनट के हम चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 950 से हमने 870, 860 तक का हमने करेक्टिव मूव देखा निफ्टी में. So last week also when we discussed कि मार्केट का अभी भी जो ट्रेंड है, बिगर ट्रेंड स्टिल इन पेन. निफ्टी में 23,050, 23,200 एक मेजर हर्डल जोन है. So जब तक वो सरपास नहीं होता तब तक थोड़े से वॉलेटिलिटी और चॉपी राइड रहने वाली है इंडेक्स में. निफ्टी का अगर हम इमीडिएट लेवल्स के बारे में बात करें तो लेट मी ओपन अप द डेली चार्ट. सो काफी टाइम से हम बोल रहे 22,800 एक मेजर सपोर्ट भी है, जिसकी वजह से बार बार वहां पे थोड़ा निफ्टी पॉज ले रहा है, वहां से थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है. पिछले 3 से 4 दिन देखे तो 22,750, 22,800 एक सपोर्ट जोन हो गई है. ऊपर में 23,050, 23,100 एक सप्लाई जोन है. सो इमीडिएटली निफ्टी का जो रेंज है 22,800 पे सपोर्ट है, ऊपर में 23,050, 23,100 पे हर्डल जोन है. जब तक 23,200 नहीं निकलता है पोजिशनली, तब तक निफ्टी का ट्रेंड विल स्टिल बी ओवरऑल मिक्स विद अपसाइड कैप. सो टॉकिंग अबाउट दैट इटसेल्फ, आज भी अगर हम देखें तो ऊपर थोड़ा हाई मारा था 23,050 तक का, वहां से वापस हमने कूल ऑफ देखा है. सो रेंज वाइज में ओवरऑल निफ्टी ये रेंज है और हमें ये रेंज ही प्ले आउट करनी पड़ेगी. 23,050 में वहां पे सेलिंग आ रही है और नीचे 22,800 के पास में थोड़ा सा वहां पे पुल बैक मूव है. If we talk about the Bank Nifty setup wise, so Bank Nifty overall देखे तो relatively outperform किया है. Bank Nifty monthly basis पे so far is almost flattish, and immediate अगर daily chart और hourly chart, let me open up the hourly chart because Bank Nifty अगर हम देखें so एक broader range में trade कर रहा है, नीचे 48,500 से लेके ऊपर 49. आज गैप डाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी हमने देखी इन बैंकिंग स्टॉक, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई एंड कोटक. नीचे 48,800 का लो मार्केट वापस we've seen a good move towards 49,500 levels, but post that again it has been sluggish and lackluster. Relatively it is outperforming because it's up by 300 points. So relatively Nifty Bank Nifty के comparison में देखो तो Bank Nifty relatively better है, mainly because HDFC Bank and Kotak are holding well. Banking as a space has been range bound. So पूरे अगर हम 4 से 5 महीने का फॉल भी अगर देखें so Bank Nifty is relatively outperform, but multiple hurdles are intact at higher zone. So 49,500, 49,650 एक immediate hurdle zone है. नीचे में हालांकि सपोर्ट भी है अराउंड 49,200, 49,000 तक का. सो बैंक निफ्टी और निफ्टी के कंपैरिजन में करें तो निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा वीक है. बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले काफी दिनों से,
एंड अभी भी वो सेटअप वाइज एक रेंज में ही लग रहा है, बिकॉज उसके जो हेवी वेट्स है कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक रेंज बाउंड टू पॉजिटिव बायस है. सो एज ऑफ नाउ ऑप्शन बाय साइड में हमने सुबह से ट्राई किया था मोमेंटम प्ले टुवर्ड्स द कॉल साइड, बट पोस्ट दैट वापस मोमेंटम अटक गया है. सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो मेजर ट्रेडिंग सेटअप for call side on the put side, but if we get any opportunity we'll definitely update on it. In the meantime, very selective BTST ideas. Now talking about the broader market. So आज काफी दिनों के बाद हमने थोड़ी broader market में एक अच्छा gains देखे, almost a pullback move of 1.5-2%. And if we see the NSE mid cap select also, so आज काफी टाइम बाद थोड़े से हमने ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन देखी है. सिलेक्टिव पीएसयू स्टॉक, सिलेक्टिव डिफेंस स्टॉक्स में बाउंस बैक पुल बैक मूव आया है. बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज विल दिस बाउंस बैक विल सस्टेन और नो. सो अभी का मार्केट जैसा है वो है मोर ऑफ इंट्राडे स्विंग. जो मोमेंटम मिल रहा है वो प्ले करके बेटर आप एंड ऑफ द डे उसको एग्जिट कर दे एंड फ्रेश पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए बनाइए. So broader market में mid cap, small cap still are looking some bounce back move is possible. Whether Nifty relatively underperform किया है, but Nifty और mid cap and small cap ने relatively outperform किया है. Now talking about few BTST ideas. So अगर हम ओवरऑल चार्ट सेटअप वाइज देखें, so सुबह से एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था एंड उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ बट वापस मोमेंटम पिकअप हो गया. सो अगर हम केन्स हमारा फर्स्ट BTST आइडिया है, सो अगर हम बिगर ट्रेंड उसका स्टॉक का देखें तो काफी अच्छा करेक्टिव मूव हमने देखा था पिछले कुछ हफ्तों से, बट डेली स्केल पे एक ऑलमोस्ट आज पुल बैक मूव दिया है. अच्छी वॉल्यूम्स हुई है, 4000 के ऊपर निकला है. सो फर्स्ट BTST हमारा आइडिया है केन्स पे 4100, 4200 भी चल रहा है. 4100 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 4350 के टारगेट के लिए. दैट इज आवर फर्स्ट BTST आइडिया केन्स. आई होप द लेवल्स आर क्लियर नोट. Yes, sir. Okay. Apart from that, if I talk about selective fertilizers and selective NBFC are still very strong. So if we talk about the chart structure of UPL, so UPL अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छी रैली हमने देखी थी फ्रॉम 550 to 650 लेवल्स एंड पोस्ट दैट मार्केट के करेक्शन की वजह से थोड़ा सा हमने कूल ऑफ देखा था, बट स्टिल डेली स्केल पे एक वापस अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, लोअर राइज को नेगेट किया है और वीकली स्केल पे अच्छे गेन्स को होल्ड कर रहा है इन स्पाइट ऑफ मार्केट वीकनेस बेंचमार्क इंडेक्स. सो यूपीएल इज वन ऑफ सीडीआई कॉल्स, वो हमारा 4 वीक फोकस में ऑलरेडी ओपन भी है. सो यूपीएल वुड बी वन फर्स्ट कन्विक्शन डिलीवरी आइडिया. 642 से 645 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 615 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर धीरे धीरे 675 और 700 के टारगेट के लिए यूपीएल वुड बी अ फर्स्ट सीडीआई कॉल. So I think you can mark the levels, Anuj. UPL is a first CDI call that is also open in a 4 week product focus. Apart from that, if you see banking stocks have been relatively outperforming and हमने कोटक बैंक पे काफी बुलिश भी थे काफी टाइम से. Slowly steadily it is moving higher. अगर आप वीकली स्केल आप देखें तो पिछले 3 से 4 हफ्तों से धीरे धीरे 1880 से होके 1980 तक गया है. इंस्पायर हमने मार्केट में काफी कार्नेज देखी पिछले कुछ हफ्तों से. सो कोटक अभी भी हमारा बायस पॉजिटिव है एंड बैंकिंग ओवरऑल स्पेस रिलेटिवली आउटपरफॉर्म किया है. रेंज में है बट वो रेंज में बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम है. सो कोटक कंटिन्यू टू डू विद अ सीडीआई कॉल. सो 1970 से 1975 के रेंज में बाय कर सकते हैं. 1930 का स्टॉप लॉस रखे ऊपर 2050 के टारगेट के लिए. दैट वुड बी अ सेकंड सीडीआई कॉल. सो फर्स्ट इज यूपीएल एंड सेकंड इज कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम पोजिशनल ट्रेड. अपार्ट फ्रॉम द बीटीएसटी हमने ऑलरेडी केन्स के लेवल्स फ्लैश भी किए हैं और हमने अपडेट भी दिया है. Now coming on to the broader market perspective, lot of events has been surpassed. RBI policy हो गई, US के भी हो गए, but now a new thing has come up that is the US trade tariffs. So some other thing will be always there in the market. वो market का nature है. Some other thing would be bigger, some other thing will be smaller, but that is a part and parcel of the market. Last काफी दिनों से हमने काफी intensive selling pressure देखे FI से. कल yesterday there was a first buy figure, but important is that कि next couple of days क्या trend रहता है. सो अगर सेटअप वाइज अभी भी हम देखें तो वीकली का निफ्टी का वीकली टर्न अभी भी थोड़ा सा पेन में है, बट एट द सेम टाइम नीचे सपोर्ट भी है. सो ओवरऑल बायस वुड बी स्टिल मिक्स. नाउ व्हाट वी कैन डू अनुज, वी कैन टेक कपल ऑफ स्टॉक क्वेरीज इन द मीन टाइम एंड एज पर द ट्रेड सेटअप वाइज की स्ट्रेटजी और ऑप्शन में या कोई स्टॉक में भी लगेगा तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द फ्लो फॉर द सेशन.
Sir, Bajaj Finance. So Bajaj Finance asking the person is already holding the position, or what is the view on the stock? Just asking a quick overview. Okay, so if we see overall, Bajaj Twins has been quite strong. So first, let me open up the weekly chart of Bajaj Finance. So in spite of market weakness, NBFC space, Bajaj Finance trading a life high territory. So weekly scale पे एक रेंज ब्रेकआउट दिया था 8,100 8,200 के ऊपर. डेली स्केल पे वापस उसमें नीचे से रिकवरी देखी है एंड आज थोड़ा सा ऊपर से कूल ऑफ हुआ है, बट स्टिल इफ वी सी द सेटअप वाइज 8,200 इज अ मेजर सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक. एंड जब तक 8,200 के ऊपर बजाज फाइनेंस रहता है, हमारा बायस वुड बी पॉजिटिव for 8,600 8,800 के लिए. So overall bias will be still positive with keeping major stop loss of 8,150 for an upside move towards 8,800 levels. So Kotak Bank. Kotak Bank, as we have already discussed, overall bias within private banks is positive, and Kotak Bank का चार्ट स्ट्रक्चर देखें अगर वीकली स्केल पे फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे स्टॉक का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है. वीकली स्केल पे पिछले 4 हफ्ते से हायर हाइज बना रहा है, लोज बना रहा है, जबकि मार्केट का स्ट्रक्चर काफी वीक रहा है. सो सेटअप वाइज जो पहले सपोर्ट था 1880 वो ऊपर शिफ्ट होकर 1930 हो गया. धीरे धीरे हमें 2020 2050 तक का अपमूव आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है. Sir, your view on SBI 730 call bought at 12. So first and foremost, if I see setup of SBI, weekly setup wise it's not that great. डेली सेटअप वाइज अगर हम देखें तो नीचे से रिवर्सल है, सपोर्ट जोन के पास में है. अगर आपने कॉल बाय किया है तो ध्यान रखिए अभी एक हफ्ता ही बाकी है मंथली एक्सपायरी को. एंड लेवल वाइज अगर देखो तो 715 718 की इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में 735 का हर्डल है. 735 की क्लोजिंग के ऊपर ही फ्रेश मोमेंटम रहेगा. अगर कॉल है तो आप 718 का लेवल क्लोजली वॉच करें. मोमेंटम अगर आता है तो बेटर टू होल्ड इट, अगर मोमेंटम नहीं है बेटर टू एग्जिट, बिकॉज अगर इधर भी रहा स्टॉक 1-2 दिन और मोमेंटम अगर नहीं रहा तो आपको प्रीमियम हर्ट करेगा, टाइम डीके का फैक्टर विल स्टार्ट प्लेइंग इट आउट. सो बेटर टू वॉच लेवल 717 ऑन द डाउन साइड एंड ऑन द अबव 735 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम क्रिएट होगा टुवर्ड्स 750 लेवल्स. So JSW Energy Future. JSW Energy, so all the mid cap and small cap stocks have seen a very brutal selling in last couple of weeks. Majority of the stocks have almost corrected by 30 to 40%. If we see the setup wise, daily scale पे थोड़ा सा pullback move हमने देखा है JSW Energy में, but if I look at the weekly chart wise अभी भी डाउनट्रेंड में लोअर एज लो लोज बना रहा है. लेवल वाइज में ऊपर 4 right now the stock is around 454 465 470 मेजर सप्लाई जोन है. जब तक उसको सरपास नहीं करता तब तक कोई मेजर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक विल नॉट चेंज. बाउंस बैक मूव हो सकता है, सो बेटर प्ले इट अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये आप एक फॉलिंग काउंटर में प्ले आउट कर रहे हैं. सो इंपॉर्टेंट आपको लेवल्स देखने के लिए ऊपर में 465 470 एक मेजर सप्लाई जोन है, वहां पे अगर पुल बैक आता है सो बेटर टू एक्सिट. Reliance, it's been a old story, but if we see the setup wise, it has been quite in a range from last almost 6 to 7 weeks. So momentum is not getting created. So far level wise में नीचे 1180 1200 का सपोर्ट है, ऊपर में 1260 1280 का हर्डल है. एंड ये पिछले ऑलमोस्ट 7 से 8 हफ्तों से ये रेंज में ही ट्रेड हो रहा है. अगर बाई करना है सो आप बाई कर सकते हैं ये रेंज में, बिकॉज वो लोअर बैंड पे है. सो लेट मी ओपन अप द डेली चार्ट फॉर रिलायंस. सो इमीडिएट में 1180 का सपोर्ट है, ऊपर में धीरे धीरे 1250 1260 का मोमेंट अपसाइड मूव आ सकता है. सो ओवरऑल रेंज में है 1180 लेके 1260 की रेंज में. In the meantime, one more BTST idea we have flash on terminal, and as we already discussed कि broader market में एक अच्छा momentum है. So उसमें अगर हम stock specific होटल स्पेस अगर देखें तो चार्लेट होटल में एक अच्छा momentum create हुआ है, strong bullish candle बना है, lower highs को negate किया है अच्छे volumes के साथ. And setup wise, I think definitely you can see a good swing. So चार्लेट होटल is a second BTST idea. 698 से 700 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 682 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 725 के टारगेट के लिए चार्लेट होटल विल बी अ सेकंड बीटीएसटी आइडिया. So Sun TV, if you see the overall mid cap
media sector as a whole, it has been in downtrend, and clearly we can see in the chart setup wise, whether it's PVR, whether it's Sun TV or whether it's Z. So setup wise अगर हम देखें, Sun TV भी clear downtrend में है. Classical sell on bounce वाला structure है जो work हो रहा है पिछले काफी हफ्तों से. So let me open up the weekly chart. तो वीकली चार्ट अगर देखें तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है. पिछले काफी ऑलमोस्ट 7 से 8 हफ्तों से, दिसंबर से डाउन ट्रेंड में 750 वाला 580 तक हो गया. सपोर्ट जोन के पास में, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो रिवर्सल. सो जब तक ये 600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक बायर्स वुड बी नेगेटिव. एनी बाउंसेस, बेटर टू एग्जिट द स्टॉक ऑन बाउंस. द बिगर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज इन प्ले. Asian Paints. Asian Paints, one of our best blue chip company within the paint sector, but if we see the setup wise, it has really lost its mojo factor. And if we see the setup wise, weekly scale में low rise बना रहा है, daily scale पे consolidate कर रहा है पिछले काफी दिनों से. Multiples hurdles intact है around 2300, 2320 levels. So it is taking time. There is no major momentum that is getting gained. So trading के हिसाब से it would be a big avoid. अगर investment wise है, so definitely can go for it, because the stock is corrected from higher levels and one of the best company within the paint sector. Trading wise में जब तक ये 2300 नहीं निकलता है तब तक there is no major momentum. नीचे में 2200 और फिर 2180 का सपोर्ट है. So we on Chambal Fertilizers. Fertilizers are relatively better, and if we talk about UPL, हमने already share किया था, that is a CDI call. Chambal Fertilizer also say it's a very interesting chart pattern. पूरे mid cap small cap has corrected more than 25 to 30% from its life high, but Chambal Fertilizer is very strong on the weekly chart. So let me open up the daily chart also. From 4 to 5 days, it was consolidating at higher levels between 515 to 550 levels. So setup wise, positionally काफी strong है. Immediate basis पे 515 का मेजर सपोर्ट है. जब तक इसको ऊपर रहता है तब तक बायर्स भी पॉजिटिव फॉर 555, 560 लेवल्स. In the meantime, I'll come back to Nifty. So Nifty का अगर हम वापस इंट्राडे चार्ट अगर देखें, from 23,050 it corrected in last 15-20 minutes. Again, we have seen some recovery from low levels. So it's more of a zigzag trending within the Nifty index in the range between 22,850 to 23,050. No clear setup we have seen. The bigger trend is still under pain. 23,200 is a major resistance level. At the same time, 22,750, 22,800 is a major support zone. So जब तक ये range में है, हमें ये range ही play करनी पड़ेगी. Coming back to Bank Nifty. So Bank Nifty का जो पहले एक hurdle हुआ था 49,350, उससे वहाँ पे थोड़ा सा support लिया, वहाँ से bounce back हमने देखा है. So sector specific में very selective sectors are moving well. आज mid cap, small cap still there are this good momentum. But guys, keep one thing in mind. If the stock is 8 to 10% up, and if you're getting some profits in intraday, better to book it during the intraday basis itself, because tomorrow we don't know what the broader market would be, and that has been the market nature for the last couple of days. So better to book profits and play that swing. Sir, any options trade or strategy trade? So the thing is, I was really looking out for option trade, Anuj, but the issue here is there's no major swing on the either side. And if you see the trend wise, Bank Nifty is relatively better. Bank Nifty is up by 400 points. Nifty is flat 30 points. So setup wise, if we go for the option wise, there is no major conviction on the option side trade setup. But yeah, from an option strategy perspective for Bank Nifty monthly that we have next week, on 27th Feb. So Bank Nifty overall bias would be slightly positive जब तक 49,000 के ऊपर रहता है. So 49,600 का call buy करके 50,000 का call sell कर सकते हो. That would be for monthly Bank Nifty players, bull call spread. जिसकी आपकी costing रहेगी 150 से 160 points की. So I'll repeat, 49,600 का call buy करके 50,000 का call sell कर सकते हो. Bank Nifty bull call spread for monthly expiry. That is for Bank Nifty. For Nifty, it has got stuck in a range, so not really much momentum is seen in the index so far. Still, if we get any setup wise at the later part of just closing before the session, if we get any opportunity, definitely will update on it. Sir, VEDL? BDL. BDL or VEDL? Vedanta.
Metal stocks, if I see the setup wise, selective metals have seen traction and they have stopped falling further. So at least there is some stability in the index. But if you see the chart setup of Vedanta, multiple bottoms are formed near 415, 420 levels. And आज भी वहीं से support लेके नीचे से घुमा है. Broadly trading a range between 415 to 445 levels. So I think if you want to enter at current levels, it would be still a better risk reward. आप 415 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 435 440 के मूव के लिए ये लेवल पे आप एंटर कर सकते हो. ऊपर मल्टीपल हर्डल्स है अराउंड 435 440 लेवल्स के अराउंड. सो दैट लेवल विल बी गुड लेवल एंट्री, गुड एग्जिट पॉइंट लेवल. वी कैन एग्जिट दैट स्टॉक नियर दैट लेवल. Sir, your view on ABB India? ABB cap goods have been really taken a good beating in last couple of months, and if you see the chart setup wise, a massive breakdown from below 6,000 towards 5,100 levels. Daily, weekly scale, all in downtrend. There's no major reversal so far, so better to wait. अगर आपकी पोजीशन फंसी हुई है so better to exit that stock on bounce near 5,350 5,004 levels. अब तक setup wise अभी भी कोई major setup नहीं है, so better to exit. The stock is in clear downtrend. So your view on Hyundai? Hyundai, post its listing, there was a lot of fuzz about the stock when it got listed. But post that, if we see the setup wise, let me open up the daily chart because it has a short history. Yeah. So if I see the daily setup of Hyundai, good recovery we have seen from almost 1650 levels to 1850 levels, and last 3 से 4 दिनों से consolidate कर रहा है between 1800 to 1860 levels. So setup wise, if we see, the stock is still on the weekly and daily setup, it is good, relatively better. If we see the comparison as compared to the broader market wise, so एक support बन गया 1770 1780 का immediate basis पे, ऊपर में 1900 तक का मूवमेंट दिख सकता है. सो बायस वाइज ओवरऑल पॉजिटिव है. 1780 एक मेजर सपोर्ट है. ऊपर में धीरे धीरे हमें 1900 1920 तक का मूव दिख सकता है. Just to talk about Bank Nifty again, so last 10 minutes again you have seen a speedy recovery in Bank Nifty. So Bank Nifty was down towards 49,350, and now again we have seen an uptick of 150 points from lower levels. And if we see the setup wise, this has been the nature for the major indices or for Nifty Bank Nifty. During the days, it tends to break the support levels, it goes further, and then we see a trapping, and then again see a recovery from low levels. This has been the nature for the market for the last couple of days, because of which option buying has been relatively difficult, because in option buying your setups should really work well. But having said that, strategy we have initiated for Bank Nifty for monthly strategy, in which we have suggested to buy 49,600 call and sell 50,000 call at net cost of around 150 to 160 points. And if we see the setup wise, as we already discussed, banking is relatively outperforming as compared to Nifty. Nifty is flat due to weakness in pharma and IT stocks, but relatively banking is outperforming. So BKG bought at 600. BKG, let me have a look at the chart. BKG at 600. So yes, I think stock is up by 10%. And if we see the chart setup wise, today a lot of stock has seen a good uptick of almost 8 to 10% move in intraday itself. If it's a trading bet, so guys, better to book profits because the stock is already up by 8 to 10%. If it's an investment bet, then continue to hold with today's stop loss. So trading अगर है, better to book profits, because अगर आपने अभी 1-2 दिन में buy किया और आपको momentum मिल रहा है, better to book profits. Investment wise, you can hold with stop loss of 600. धीरे धीरे आपको ये 700 720 तक का move दिख सकता है. So your view on Voltas? Voltas, as being another stock from the broader market, this stock has taken a beating in last couple of weeks from almost 1800 levels to 1230 1250 levels. But if we see the setup wise, daily scale पे वापस kind of हमने reversal देखा 1220 1230 के level से. At the same time, multiple hurdles are intact near around 1350 1380 levels. So setup wise, bigger trend is in pain. But however, you can see some bounce back move towards 1300 1320 because mid cap small cap में हमने pull back देखा है, because of which lot of stocks are seeing good traction from the lower levels. But guys, keep one thing in mind, this is a pullback move, so better a quick entry and quick exit would be possible, would be better. लेवल्स के बारे में बात करें तो 1180 का मेजर सपोर्ट है अभी इमीडिएट बेसिस पे, और ऊपर में 1350 1380 तक का मूव दिख सकता है.
Sir, I'm just confirming the numbers for the bull call spread. Yes. Buy Bank Nifty 49 600 call, sell Bank Nifty 15,000 call, combined premium 150 points. Yeah. So right now I just need to recheck the premium, but it would be around in that range itself. That is for the monthly expiry. Got it, sir. And in that, one more addition that I would like to say, you have to maintain the stop loss and target also. So the premium is around 150, 160. You can maintain a stop loss of 80 points of the combined pair for an upside move towards 250, 260 points. Sir, Radhika Jewelers. Radhika Jewelers. Radhika Jewel Tech, right? Yes, sir. So if we see the setup wise, again the stock is in downtrend. A lot of jewelry stocks have taken a beating in last couple of weeks. So setup wise, multiple supports are seen near 95 levels. 95 के breach होने के बाद एक हमें further downside move दिख सकता है. Upper band में 101, 102 का major hurdle है. जब तक 102 को सरपास नहीं करता है, तब तक bias would be negative. So, guys, that will be all from our side. So, anything else that you would like to mention before we end the session? Yeah, so I just want to summarize thing once again for Nifty, Bank Nifty for the broader market. Nifty major level is 23,200 on the upside. On the downside, 22,800 is the support zone. जब तक ये range में रहता तब तक ये range हमें play करनी पड़ेगी. If we talk about Bank Nifty is relatively outperforming, but still वो भी एक range में फंसा हुआ है. नीचे 48,500, 48,750 support है. ऊपर में 49,500 and then 50,000 के एक hurdle zone है. So banking stock is relatively outperforming and banking might see some uptick if we see some recovery in the broader market and the index market. So Bank Nifty में हमने bull call already suggest किया है. UPL and Kotak we have given conviction delivery ideas. BTST हमने already share किए levels, gains and another counter was Hotel. So these are the two BTST idea, Chalet Hotel and UPL, Chalet Hotel and Keynes of the BTST idea, and two CDI calls we have already mentioned the levels. So I think tomorrow we have Nifty expiry. Today Nifty has been relatively dull in a range. Tomorrow we might see some fireworks in Nifty expiry. So I think that's all from our side. Looking forward to guys for tomorrow's expiry. Okay, thank you everyone. Thank you, Arpit sir. Thank you guys.